looming energy crisis is now threatening India's pharmaceutical sector as well, raising concerns of a possible shortage of essential medicines in the coming weeks. An acute shortage of propane and LPG, critical for industrial boilers, has forced several pharma units across Gujarat, Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh to partially or fully shut operations. Around 200 manufacturers may halt production within 7 to 10 days as fuel shortages disrupt operation. India's pharma sector relies heavily on LPG for steam generation, sterilization and chemical processing. The crisis is linked to the disruptions in the Strait of Hormuz, a key global energy route. Most pharmaceutical raw materials are petrochemical deprived, with inputs like naphtha and methanol moving through Hormuz. With the route now unsafe amid the Iran conflict, supply chains are under severe stress. Experts say that nearly 99% of pharma feedstocks are petrochemical based. This means medicines like pharmaceutical, paracetamol, ibuprofen, metformin and antibiotics are directly linked to oil supply chains. As petrochemical plants shut globally, the impact is now spilling into drug manufacturing. India is a critical player in the global healthcare. The country produces 20% of the world's generic medicines and supply 40% of US demand. Any disruption here could trigger global medicine shortages. Even vaccine production, led by firms like Serum Institute of India, depends on petrochemical inputs. Now, industry experts warn of shortages in paracetamol, syringes, globes, and injectable drugs. Companies currently have 3 to 6 months of inventory, but stocks are depleting faster. Rising fuel costs and supply gaps are also pushing up manufacturing costs. The government has prioritized LPG supply for households, tightening availability, but industries. Pharma companies are now seeking special exemptions similar to those granted during the COVID pandemic. Experts warn that any prolonged disruption could have serious consequences for both India and global healthcare systems. From energy to fertilizers and now medicines, the ripple effects of the Hormuz crisis are expanding, with the risk of turning into a full-blown global health challenge. A major crisis unfolding, and the LPG crisis is now hitting the pharmaceutical sector in India as well. Generic medicines like paracetamol, gloves and syringes can be affected, and a supply shortage could be witnessed if the tensions in the Strait of Hormuz continues and India's LPG supply is cut off due to the tensions. And now, amid LPG crisis from across the nation, Mumbai's iconic Kirti College Vada Pav stall has temporarily shut down, leaving food lovers disappointed. Every day, hundreds would queue up to savor its famous Vada Pav, which is right outside the Kirti College in Dadar. From the common man to prominent businessmen and even those arriving in luxury cars, people from all walks of life would stop at that stall for a bite. But now, with LPG cylinders in short supply, the beloved stall has been forced to shut operations, bringing disappointments to its loyal customers. Have a look at this report. अगर आप कभी मुंबई आए तो मुंबई में आकर अगर आपने कीर्ति कॉलेज का वड़ा पाव नहीं खाया तो आपने मुंबई में एक अच्छी चीज़ कह सकते कि मिस कर दी। जी हाँ, हम इसी कीर्ति कॉलेज के वड़ा पाव के बगल में मौजूद है। वैसे इसका नाम अशोक वड़ा पाव सेंटर है, लेकिन इसे कीर्ति कॉलेज वड़ा पाव के नाम से जाना जाता है। ये वड़ा पाव पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में सबसे फेमस ये वड़ा पाव है। वड़ा पाव का ये स्टॉल कल से बंद हो चुका है। वजह साफ है कि एलपीजी सिलेंडर यहाँ पर इन्हें नहीं मिल पाया है,
जिसके चलते ये स्टॉल यहाँ पर बंद हो चुका है। मैं इस वड़ा पाव की खासियत आपको बताना चाहता हूँ। एकमात्र ऐसा वड़ा पाव है जिसे खाने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर मुंबई जब घूमने आते हैं तब यहाँ पर वड़ा पाव की टेस्ट करने के लिए यहाँ पर वह पहुँच जाते हैं। इतना ही नहीं, दूर दराज से लोग आते हैं और वड़ा पाव पार्सल लेकर दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर वो वड़ा पाव पार्सल लेके जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं आज पर यहाँ पर हमेशा भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन अब ये देखिए पूरे यहाँ पर पूरा शांत है, पूरा खाली है, पूरा बंद हो चुका है। यहाँ पर रोज़ाना 8 से 10 लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर ताला लगा हुआ है क्योंकि एलपीजी यहाँ पर नहीं है। रोज़ाना यहाँ पर सुबह से ही भीड़ देखने मिलती है। कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ पर आकर वड़ा पाव के लिए लाइन लगाते हैं और यहाँ पर वो वड़ा पाव खाने आते हैं। कीर्ति कॉलेज का वड़ा पाव अब पिछले एक दिन से यानी कल और आज यानी कल से वो बंद हो चुका है। अब आगे कब शुरू होगा वो पता नहीं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो वड़ा पाव खाने आए हैं। क्या नाम है आपका? जीत मनवानी। अच्छा, कहाँ से आए जीत भैया? गुजरात से आए हैं। गुजरात से? अच्छा अच्छा। स्पेशली वड़ा पाव खाने ही आए थे। पहले हम लोग मंदिर दर्शन किया, फिर सोचा कि कीर्ति वड़ा पाव खाएंगे, बट बैड लक है जो ओपन ही नहीं है वो, तो मैं सो गया हमारा भी वो। बट अच्छा। बहुत अच्छा नाम सुना है इसका कि भाई बहुत अच्छा वड़ा पाव मिलता है यहाँ पे। कभी इससे पहले आप आए थे क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम ही आ जाए हम लोग। वड़ा पाव बहुत खाया बट कीर्ति वड़ा पाव का नहीं खाया था, तो आज स्पेशली हम लोग इधर आए, सिद्धिविनायक का दर्शन करके हम लोग इधर आए थे वड़ा पाव खाने के लिए, बट वो क्लोज है अभी, बोला कि शायद ओपन नहीं होगा, ऐसा कुछ है। हाँ, कल से बंद है क्योंकि एलपीजी नहीं है। यस। तो मायूस है? हाँ, थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? राज पटेल। अच्छा, राज पटेल जी, क्या लगा था आज वड़ा पाव खाएंगे? क्या सपने बुद्धे थे क्या? देखा तो सही पर बंद था, इधर आए तो फिर। इससे पहले कभी आए थे आप? नहीं, फर्स्ट टाइम। क्या क्या सुना है वड़ा पाव के बारे में, जरा हमें बताइए। बहुत अच्छा मिलता है, बेस्ट मिलता है। लाइनें रहती है इधर पूरी, बहुत ज़्यादा लाइनें होती है, पर आज पता नहीं। वो भाई साहब बोला 12 बजे खुलता है, पर पता लेकिन नहीं। कल से ही बंद है ये क्योंकि एलपीजी नहीं है। अच्छा। देखिए ये वो वड़ा पाव सेंटर है, यहाँ पर जो लाइन लगती है और यहाँ पर ये लाइन काफ़ी लंबे तक ये लाइन होती है। लोग सिर्फ वड़ा पाव खाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन ये कीर्ति कॉलेज का वड़ा पाव आज नहीं मिल रहा है। वजह है एलपीजी की कमी। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि वो धीरे धीरे आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू रखेगी, लेकिन अब तक सच्चाई ये है कि मुंबई के कई ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट, ऐसे फूड स्टॉल को एलपीजी नहीं मिल रहा है। अधिकतर ये छोटे फूड स्टॉल ऐसे बंद हो चुके हैं। कुछ होटल में जो खाना बन रहा है वो सिगड़ी पर बन रहा है, कोयले के जरिए बन रहा है। कुछ जगह चूल्हे जलाए जा रहे हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है। Well, now in a big disappointment to all the vada pav lovers in Mumbai, the iconic Kirti College vada pav has been shut down amid the LPG crisis in the city after Karnataka and Andhra that saw shutdowns of restaurants and hotels across the state. Maharashtra is also now seems to get hit by the LPG crisis. Vada pav center, iconic center, has been shut down amid the crisis. People who travelled specially to Mumbai to have the vada pav are now disappointed. Meanwhile, an illegal LPG sale racket has been busted in Delhi's Jamia Nagar, with one accused arrested and another still on the run. Accused Shahnawaz, involved in the illegal sale of LPG cylinders, has been arrested, while his accomplice Mukesh remains absconding. Police recovered a total of 62 LPG cylinders from the spot, of which 48 were filled. The Tata Ace vehicle used for the illegal supply has also been seized. The accused was apprehended during a police patrol at street number 39, Yamuna Pushta, where he was found selling gas cylinders without any license or receipts. During interrogation, it was revealed that the cylinders were procured from Meerut and transferred from a pickup truck to a Tata Ace at a secluded location. Just a day earlier, the accused had brought in around 70 cylinders and sold them within the locality. He had been involved in this illegal activity for the past 2 months. An FIR has been registered under relevant sections of the Essential Commodities Act and the Bharatiya Nyaya Sanhita. Well, a major illegal racket busted by the security forces as
The hoarding and black marketing of LPG cylinders continues. LPG crisis has forced restaurants to shut down its operations, and reports are coming in that this LPG crisis can now affect other sectors as well. And at this time, the government has urged people to not panic book or get involved in illegal and black marketing of LPG cylinders. And in the latest information that is coming on, the guy accused that was arrested, a day earlier, the accused had brought in around 70 cylinders and sold them within the locality, and he has been involved in this illegal operation for at least 2 months. Relevant sections of the BNS have been invoked, and the Essential Commodities Act has also been imposed against accused. Major illegal drug LPG illegal racket busted in Delhi's Jamia Nagar. The vehicle Tata Ace that was used to store the cylinders have also been seized by the police.